हेलो जनता, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट गुड ओल्ड डेज। आज हमारे साथ हैं पूजा राय, अ फाउंडर ऑफ एंथिल क्रिएशंस, अ मूवमेंट दैट इज ब्रिंगिंग बैक द पावर ऑफ प्ले टू द kids. By building sustainable and affordable playscapes across the country, she is on a mission to create a playful India. They have built more than 280 playgrounds and have impacted more than 1.5 lakh kids. But the story started with one school at her alma mater, IIT Kharagpur. Hello, Pooja. Very warm welcome. I'm so glad that you joined us today. I get so excited when a women speaker comes on our show. Thank you so much, Neha. Very, very happy to be on Good Old Days, and it's very refreshing to be talking about KGP days and looking forward to talking to you. Yeah. Okay. So, Pooja, this idea, so I'm so impressed by this idea creating playgrounds for kids. It's so simple yet so impactful idea. I mean, बच्चों की ज़िंदगी बदल जाती है when they get access to a good playground. तो हम इससे शुरू करते हैं कि आपको ये आइडिया आया कैसे. It's actually, I don't know if I can answer that question. Mostly ऐसा होता है कि हम एक आइडिया सोचते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. आई थिंक हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एक प्रॉब्लम देखी अपने सामने. There was this school, most of the KGP people would know, दिशा सीमा केयर सेंटर, जहाँ पे हमने देखा कि बच्चे ऐसे चप्पलों से बैडमिंटन बना के खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग विद सम ब्रोकन pipes, stones, and being architects, we thought that this, the everything that we have studied for last 5 years, can we use that knowledge in some way to build a playground for them? So that's how we ended up building our very first playground. उस टाइम पे शायद हमें पता भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या इस प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी कितनी है. But we just went ahead to give happiness to those 250 children for the when we built our very first playground. So how did this initial idea turn into a full fledged startup? क्योंकि हम में से कितने लोग को कॉलेज में आइडियाज आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बट सब वहीं के वहीं रह जाते हैं. बट लाइक हाउ एंड वाई यू थिंक ऑफ कंटिन्यूइंग विद दिस आइडिया इवन आफ्टर योर कॉलेज. So I also wanted to, take this idea forward right after college. And if not this idea, I really wanted to do a startup. But जब college placements होती हैं, peer pressure, family pressure, I was not able to, take this idea forward right after my college. So I took up placement. I was working as a product manager in Bangalore for a year. And उस एक साल में हमें पूरी country से almost 300 से भी ज़्यादा requests आई to build such playgrounds. And I think that was the moment when we Wow. felt that this is a very big problem. In India, we give so much importance to classroom education, but we don't even realize that play is important for children. I remember starting में जब हम schools में जाते थे, उन्हें दिखाते थे कि हमें ऐसा playground बनाना है. एक school principal ने हमें बोला कि नहीं, ये playground मेरे बच्चों को distract करेगा पढ़ाई से. So I think we live in a society where the Oh. mindset is only academic, and we do not look at holistic development of children. So I think that was a point when me and my co-founder, we thought ki let's give it a shot, let's try and take this venture full time. Okay. So now let's talk about the lonely days of your startup journey. Like this idea started with five of you, but finally you are the only one who is running the show. तो मतलब आपको अकेला महसूस नहीं होता, या फिर आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. um, to be honest, कभी ऐसा दिमाग में आया नहीं that I'm running the show alone. I don't think so. I'm running the show alone. All of my co-founders have been there from the very beginning because we didn't start this with an aim to make money, right? We wanted to solve a problem. And हमने जब कॉलेज में भी स्टार्ट किया था तो हमने खुद से we were motivated अंदर से, and we were doing it for children. We were not doing it to make ourselves successful. And I think that has stayed like with all of us, like solving and making solutions for children is something core to all of us. And when you see a successful startup, it's never one person. It's a big team. It's a big support system of mentors and people who are around you. So मुझे लाइफ में कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि like I'm alone in this journey.
In fact, I have been feeling so grateful. I sometimes feel that why are people helping me so much? And then they tell me ki it's not you, it's the cause that you're working for. So I think if you really pick up a good problem and solve, and find a solution to it, there will be a lot of people who will join you in that journey. बट ऐसा कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया कि आपको ऐसा लगा हो कि बस बहुत हो गया, वापस चलते हैं कॉर्पोरेट जॉब की तरफ? कभी भी ऐसा नहीं लगा? ऐसे मोमेंट्स तो बहुत आते हैं, बट ये नहीं सोचा कि कॉर्पोरेट जॉब करना है. देर आर सम टाइम्स, लाइक आई रिमेम्बर फर्स्ट ईयर में तो दिस यूज टू हैपन ऑलमोस्ट एवरी डे, कि सुबह सोचते थे कि ये क्या कर लिया, लाइफ खराब हो गई है. इससे अच्छा तो जॉब ही कर रहे होते. दैट सैलरी दैट कम्स एट द एंड ऑफ द मंथ इज वेरी lucrative एंड वेरी डिफिकल्ट टू लीव. सो ट्रू. ऐसा बहुत बार ऐसा ट्रू. लगता था कि आगे इसका फ्यूचर क्या है, क्या हमने गलती तो नहीं कर दी, स्पेशली व्हेन योर ओन फैमिली इज नॉट बीइंग वेरी सपोर्टिव ऑफ आप जो कर रहे हो. बट एंड आई थिंक क्योंकि हमारा नॉन प्रॉफिट है, देर आर सर्टन लिमिटेशंस ऑल्सो, राइट? लाइक इट्स नॉट ऑल हैप्पी गो लकी टाइप. बहुत सारे limitations हैं in terms of how much we can pay ourselves, in terms of following all the compliances, and constantly being being out there pitching your idea. So बहुत बार ऐसे आए thoughts, but I think when I used to go to these playgrounds and see their happiness, all of these problems seemed like it's worth all of these problems. And I think every problem has sort of helped me grow and build more resilience. So yeah, looking back, I think it's all been good. Even, yeah, I was also scrolling your Anthill Creations Facebook page, and those happy faces of kids. I mean, and the other colors, and it's like कि मतलब मुझे देख के इतना satisfaction लग रहा था, and like you are building their happiness, Hmm. I would say, yeah. And like, what about your family and relatives, rishtedar? What has been their opinion about you? Like a young IIT girl building playgrounds for kids. उनको तो लग रहा होगा कि पता नहीं दिमाग ही खिसक गया है. Exactly. I remember when I told my parents first time, उनको लगा कि इसका quarter life crisis चल रहा है life में. She'll come back after a few months. But when I told them this is what I want to do, like पूरी life, तो वो थोड़े से serious हो गए. उन्होंने, I think they wanted good for me, but वो concerned थे कि what will happen to my career. I mean, I come from a family जहाँ पे businesses में भी काफी कम लोग हैं, तो understanding startup और non-profit was very far-fetched. एंड आई थिंक एक जनरल जो एक माइंडसेट है दैट एनजीओ चलाने वाले लोग एस्पिरेशनल नहीं होते हैं, तो मेरे पेरेंट्स को लगा था कि लाइक ये लाइफ में सीरियस नहीं है. माय ब्रदर आई रिमेम्बर सेड कि यू हैव अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब जो लोग एमबीए के बाद करते हैं, व्हाई यू क्विटिंग योर वेल career path and taking something which is so non-conventional. So I think, yeah, I think my parents didn't even tell my relatives for good 6-7 months that I have quit my job. um, and I remember I was home for Diwali and they said कि बताइए आप क्या कर रही हैं, in a very sarcastic way. So it was, I think it's been 5 years. They I think still feel कि काश मेरी बेटी गूगल या फेसबुक में काम कर रही होती instead of doing her own NGO. But I think there's a balance between what I want to do in life and how, like, how I want to keep my parents happy. Yeah, yeah. So, like, it's a wonderful story, Pooja. Now, I'll take our audience to your KGP days where I feel the seeds of Pooja as an entrepreneur were sown. So, आप architecture department से थे, and architecture department in KGP is a completely different world. आप हॉस्टल सिर्फ सोने के लिए आते होंगे आप लोग, एंड ये आपका पूरा असली घर तो डिपार्टमेंट ही था, एंड आई एम श्योर सोते भी होंगे आप डिपार्टमेंट में कई बार. बट what is most interesting part is that you contested for an election at the department despite knowing that you will lose. So tell us more about that. Yeah, I think my friends used to say कि architecture को तो एक अलग college ही होना चाहिए था. And my wingies always complained कि like you don't spend enough time with us, क्योंकि हम पूरे time department में assignments करते रहते थे.
आई डोंट इवन रिमेम्बर कि 8-9 दिन हम नाइट आउट्स कैसे मार के काम करते थे. बट हाँ, आई थिंक ब्यूटीफुल डेज. Talking about elections, I was involved in a lot of extracurriculars. मतलब starting से ही like college गई तो इतनी सारी opportunities दिखी, dramatics, college के department fest, college के fest, and I was excited for everything. So since we spent so much time in department, I wanted to be a part of the council, and I contested for as a social and cultural secretary. एंड द फर्स्ट रिएक्शन पीपल हैड वाज कि इस पोस्ट के लिए कभी कोई लड़की कंटेस्ट नहीं करती है. एंड आई वाज लाइक ओके, लाइक क्यों नहीं करती है, राइट? लाइक आई विल डू इट, लाइक बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन social cultural activities and not maybe so much in say designing a magazine or something else. So I went ahead, and every time we used to go to our seniors for preparation and all, they would take me so lightly कि तू क्यों कर रही है, time waste कर रही है, जाके कुछ और कर ले. And but I just went ahead, and even though I did not win that um, election, I am like looking back, I feel good that I went ahead and did that. तो ये जो मोटिवेशन है, हाँ, आपको पता था कि यू विल लूज, राइट? दे बिल्कुल चांस नहीं है जीतना का, एकदम ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि जीतेंगे, बट यू कंटिन्यू टिल द लास्ट मोमेंट. आप इजीली बीच में क्विट कर सकते थे, राइट? बट ये जो पैशन है आपका, ये जो एटीट्यूड है कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, ये इसका इसका मोटिवेशन कहाँ से आता है? पता नहीं ये पैशन है या बेवकूफ़ी है. बट आई थिंक उस वक्त तो यही सोचा था कि उस वक्त आया ही नहीं दिमाग में ऐसा कुछ कि क्योंकि कभी किसी गर्ल ने नहीं किया है तो मुझे नहीं करना चाहिए. एंड इवन नाउ आई रिमेम्बर, मतलब आई एम इन अ लॉट ऑफ दीज बोर्ड मीटिंग्स एंड रूम्स वेयर आई एम द ओनली फीमेल, एंड आई डोंट इवन नोटिस बिकॉज आई डोंट लुक एट पीपल्स जेंडर. एंड मुझे लोग बताते हैं, ओ यू आर द ओनली फीमेल हियर. Even Young Alumni Achiever Award, it was only when somebody else told me that you're the first woman who got this, and I was like, oh really? Because I think हमारा focus होना चाहिए अपने काम पे, and we should not look at it कि because I'm a girl I'm doing it. Or I wasn't rebellious for that particular post कि क्योंकि किसी ने नहीं किया इसलिए मुझे करना है. Like I just felt more connected to it, and I'm very proud कि पिछले 10 सालों में things have changed. We have at Gymkhana level, we have a lot of female. Um, we also have a president, female president. So I think things have changed, Yes. and it has to start somewhere. I think a few people lose, and then there are a few people who win as well. या सो पूजा, मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ ये जानने में, बिकॉज लाइक जनरली हम विमेन को ये प्रॉब्लम होती है कि वी ओनली स्टार्ट लुकिंग डाउन, और हम में ये आ जाता है कि नहीं, लेट्स नॉट डू दैट, इट्स नॉट फॉर अस. बट दिस इज़ नॉट द केस विद यू, राइट? सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम योर फैमिली और समवेयर एल्स, कि आपको ये बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि यू आर वुमेन, और बिकॉज ऑफ योर जेंडर यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड डू दिस. मतलब हाउ इज़ इट कमिंग? It's coming from your upbringing, or what it is? I actually don't know. I think growing up, also my mom tells me that I always used to have, ask for equal share with my brother, and at home we were treated equally. And whenever I felt there wasn't equality, it kind of bothered me, and I always used to voice my, concern. So I don't know if it is upbringing, or if it is just focus on what you're doing rather than just looking at it at from a gender lens. And I think now I think when I went to college and when I post college, I have been more conscious and aware of my own biases as well. But I think it's a part of the process. I think we we all have different kind of conditioning. I mean, I come from UP, which I would not call a very open-minded society. So I don't know where that comes from. Okay, it's just God gifted, or I guess you are so focused, I would say, that you don't
सी कि जेंडर क्या है. यू आर जस्ट so focused on your work. That is so good. So, Pooja, you were quite active in ECEL of IIT Kharagpur, right? And I'm sure that must have given you a lot of exposure to the startup world. So, how was your experience, and like how did it shape your decision to continue entrepreneurship after college? So I think सबसे बड़ी चीज़ जो ईसेल ने मुझे दी was to have confidence in myself. मतलब मैंने when I was a teenager, I conducted my entire event on entrepreneurship in my home city. So and I there were a lot of times when I called up my senior and मैंने बोला कि मुझसे नहीं होगा, but उन्होंने बोला कि we are all there to help you. So I think that is what I'm most thankful to. आई रिमेम्बर फर्स्ट कॉलेज में मैं लखनऊ में जब गई थी बात करने कि हमें ये एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे इवेंट करना है, ईएडी करवाना है, and my dad went with me and principal was constantly talking to my dad and not to me. So next कॉलेज में जब मैं गई मैंने अपने पापा को बोला आप बाहर रहना मैं बात करके आती हूँ. So I think Wow. just when you have completed your school to get an opportunity to do such big events, such big fest, represent your own college in your home city, I think वो बहुत बड़ी चीज़ थी. um, एंड ऑफ कोर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हुई थी. वी मेट अ फ्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड विद दैट इंटरेस्ट फिर मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू राइट अ बुक ऑन women entrepreneurs. And I think that was the point when I realized the nuances of entrepreneurship. बाहर से देखने में तो बहुत फैंसी लगता है, बट उसके जो रियल स्ट्रगल्स होते हैं, इट्स नॉट small decision that you take which you can just change, but there are a lot of obstacles that come on the way and you have to be really determined. तो वो सारी चीजें मैंने I think थोड़ी सी समझी and I felt this, I want to do this. और ये बुक की इंस्पिरेशन कहाँ से आई पूजा? Actually ऐसी कोई इंस्पिरेशन नहीं आई. मतलब आई डोंट थिंक कि मैं बहुत अच्छी से राइटर हूँ, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट एंटरप्रेन्योर्स इन पर्सन एंड उनसे उनके साथ ऐसे बैठ के वी वर हैविंग कॉफी इन बैंगलोर एंड वो अपनी ऐसी कहानियां बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. एंड आई मेट 9 सच एंटरप्रेन्योर्स और हर एक स्टोरी में एक कॉमन चीज थी कि जब भी मैं उनसे पूछती थी कि आपकी वो ऑब्स्टेकल्स क्या आए, प्रॉब्लम्स क्या आए, they would never complain. They would only say कि हाँ ये प्रॉब्लम आई बट हमने सॉल्व कर लिया, या फैमिली से people were not supporting but ठीक है we convinced them. So एक वो कॉमन वो दिखा कि एक जिद है, एक ड्राइव है सबके अंदर to towards the problem that they're solving, the passion. And I think if you don't have, I mean passion is a very overused word, but I feel जब problems आती है ना, if you're not passionate you give up. But if you really want to solve a problem, Hmm. I think that keeps you going in those low moments. या ट्रू. अभी एक फन क्वेश्चन और ट्रिविया क्वेश्चन. तो आपका और मेरा हॉस्टल एसएन हॉल, सेम हॉस्टल में थे हम लोग. Oh, एंड ये आपको ये बताना है कि अपने हॉस्टल में कितनी कैंटीन्स थी, या मतलब कुछ भी खाने का छोटा मोटा भी मिलता था. हाउ मेनी ऑफ सच कैंटीन्स वर देयर? MBM को अगर कंबाइन कर दे, there were only 2 canteens. वो भी बहुत ही छोटी छोटी थी, कुछ भी नहीं मिलता था. बट नाइट कैंटीन को इंक्लूड किया आपने? हाँ, एक नाइट कैंटीन थी और एक MBM वाली जहाँ कुरकुरे चाट मिलती थी. और एक वो जीरोक्स शॉप के बगल वाली? हाँ, एक तो वो जेरोक्स शॉप के बगल वाली और एक नाइट कैंटीन. और कौन सी है? ओ और एक नेस्की. बीच में एक जो जहाँ नेस्की. ओ हाँ हाँ हाँ. नेस्की. ओ डैम, सॉरी. ओके. और सबसे फेवरेट क्या था, क्या खाना पसंद करते थे जो भी मिलता था छोटा मोटा? यार मुझे रात में लाइक बिकॉज एग्जाम्स के लिए तो पूरी रात ही पढ़ाई होती थी. आई थिंक कॉफी और मैगी मेरे को सबसे ज्यादा पसंद थी. आई स्टिल क्रेव फॉर दैट मैगी, छेदीज की मिर्ची मैगी एंड भाटू मैगी. आई स्टिल हाँ यहाँ अभी मतलब भाटू मेरे मैगी. अराउंड ऐसे सबको ऐसे हेल्थ कॉन्शियस हो गया है तो मैगी वैगी नहीं खाता है, बट मुझे तो बहुत ऐसे क्रेविंग्स होती है. या
And one final question. So, if you have to give some advice or suggestion to Pooja, who is still a college student, what would that be? यार ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल है. I think I'm very happy with like, कुछ भी? हाँ, um, I think I would say I was, and I'm still a person who lives very much in the moment. I made a lot of friends in college, which I think is a good thing. So I would say kudos, Pooja. Uh, I still cherish. Like I was very happy that I had a 5 year course instead of a 4 year course. But I think what I would say is कि I could have thought a little more systematically. अगर मुझे जैसे स्टार्टअप करना था तो मैं थोड़ा सा पहले से उसकी तरफ काम. I think मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे हो गई and then it was all like connecting the dots backwards. But it was very late that I started taking conscious decisions कि this is what I want to do. So like these are the steps that I need to do to achieve there. So हाँ, I think that is the only advice I'll say कि college is an amazing time. You have your friends with you. It is the best time to do startups, form a team, and yeah. Okay. It was great talking to you, Pooja. I really, really enjoyed talking to you. And thank you for taking out some time for Thank you. It was a pleasure talking to you and loved all your questions. us.